Hello guys, how are you? So this is History Fox channel और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू अप टू 9th century AD. Okay, so up to 9th century of AD मतलब that is early history of Jammu. Okay, so it is very difficult topic because we don't have any sources to study this topic. So let us make an attempt. So what we are going to discuss, that is prehistory Jammu, that is Harappan culture in Jammu, or you can say that here Jammu means Jammu region. Okay, so Jammu region means that is except Kashmir region. Okay, so presently अगर हम बात करें तो जम्मू में there are 10 districts, कश्मीर में there are 10 districts. So Jammu regions mean all the districts of Jammu. That is Rajouri, that is Poonch, that is Kishtwar, that is Bhadrawa, that is Kathua, that is Udhampur, that is Samba, that is Ramnagar, that is Riasi. So all these areas I'm going to refer, that is the Jammu region. Okay. So prehistoric Jammu हम discuss करेंगे. What about the condition of prehistoric history in Jammu? That is Harappan culture in Jammu, then Jammu in Vedic literature, Jammu in oral tradition. Then there are two important dynasties, that is Rai Dynasty or Dhar Dynasty. These dynasties are the early rulers of Jammu. Okay, so after Rai dynasty and Dhar dynasty, there is a very famous dynasty, that is the Dev dynasty. Okay, so Dev dynasty जो है हम अगले lecture में discuss करेंगे. Okay, so that is the main issue with the history of Jammu, is that is there are no sources. हमारे पास कोई भी sources नहीं है, historical sources हमारे पास नहीं है. Okay, then last class mein we have discussed when Maharaja Gulab Singh in 1846 he became the ruler. He became the ruler of Jammu and Kashmir. He deputed a person whose name was Ganesh Das Badera. Okay, so Ganesh Das Badera ने को डिप्यूट किया गया to write the history of Jammu on the same pattern as it was written by Kalhan Raj Tarangani. Okay, so it was very difficult task for Ganesh Das Badera. However, he complied the order. Okay, so he wrote a book that is known as Raj Darshani. ओके सो दैट इज नोन एज राजदर्शनी. इस पे हम डिस्कस करेंगे अलग से. सो जो राजदर्शनी है उसके जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं. राजदर्शनी जो है टोटली डिपेंड अपॉन वंशावली. वंशावली, वंशवली भी बोलते हैं और फैमिली हिस्ट्री भी बोलते हैं, फैमिली ट्रीज भी बोलते हैं. ओके, सो हर एक रूलर, हर एक जो हिली रूलर था, राजा था, राणा था, जो के ओके सो दे यूज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हिस्टोरिसिटी. सो दैट इज वंशावली. सो वंशावली जो आज की क्लास जो है, जब हम दर डायनेस्ट की बात करते हैं या राय डायनेस्टी की बात करते हैं, जो उनकी हिस्ट्री जो है इट इज इंटायरली डिपेंड अपॉन वंशावली को हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, so let us start with, you can say that let us इसको कहाँ फिक्स करें. ओके, यहीं पे फिक्स करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द दैट इज प्री हिस्टोरिक जम्मू. प्री हिस्टोरिक जैसे आज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री मतलब वेयर वी डोंट हैव एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स. Okay, we don't have any written records. That portion of history is known as prehistory. Prehistory. Okay, prehistory means no written records. And prehistory की basic example क्या है? That is stone ages. Okay, so stone ages, further we have divided stone ages into Paleolithic age, Mesolithic, and Neolithic age. So what I mean to say, is there any remains of prehistory in Jammu region? So let us discuss. Okay, so we found prehistory tools in district of Jammu, कठुआ, सांबा एंड उधमपुर. हमारे पास कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं. लार्जर स्केल पे नहीं मिले हुए हैं, स्मॉल स्केल्स पे मिले हुए हैं. ये जो प्री हिस्टोरिक टूल्स हैं इट बिलोंग्स टू प्री सोनियन इरा एंड द सोनियन इरा. ओके, so there is a one prominent culture in prehistory, that is Son culture. Son is a river in presently it is a it's a river or it is a plateau region. Potwa region जो है that is somewhere there is a one river, that is Son river. It is in Pakistan or in the Punjab, western Punjab. So वहाँ के कुछ जो हमारे पास जो tools मिले हुए हैं उन tools को collectively हम बोलते हैं that is Son culture tools, that belongs to that is prehistory. So on the same line we found certain tools in Jammu, Kathua and Sama districts. Okay,
So what are the prominent tools of this region? That is choppers, cleavers, blades, axes. Okay, so hand axe. Okay, so prominent sites कौन कौन सी है? नगरोटा जो जम्मू में है, कोटा ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, वेरी फेमस, आज की डेट में बहुत गंदी हो गई है. ओके, देन नंदी, देन मनामू, देन दयालाचक, देन पाल्थ ऑन द बेड ऑफ रिवर बसंतर रिवर. ओके, that is in Kathua region. Then Kishanpur on the bank of river Gambhir Khad. Okay, this is a small river. It is not called a river. It is not a perennial. It is a seasonal. Okay, so we have certain sources of prehistory in Jammu region. That is the main tools कौन से हैं? Choppers and cleavers. जम्मू में मिलता है, कठुआ में मिलता है, सामा में मिलता है, और उधमपुर में भी मिलता है. दैट इज नगरोटा, कोटा, नंदी, मनामू, दयालाचक, यहाँ से हमें मिलते हैं. ओके, so then in that is a Harappan culture in Jammu region. Okay, so first important thing जो हम आपको बता दें, हम मैं आपको डिस्कस करूं कि हड़प्पन कल्चर जो है, इट इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन कल्चर? बिकॉज हड़प्पा जो है, इट वाज द फर्स्ट साइट जो हमें मिली थी, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर टाइम पीरियड है, दैट इज 2500 से 2000 BC तक है. ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इट इज आर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ जम्मू विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? और जम्मू रीजन की कंडीशन क्या था? जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जम्मू रीजन में मिलती है, दैट इज मांडा इन अखनूर. इट इज द वेरी फेमस नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो मांडा जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नदर्न मोस्ट साइट जो है, इट इज इन अखनूर और इट इज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज वेरी पॉपुलर. डिस्कवर्ड हड़प्पन रेडवेयर, ग्रेवेयर एंड ब्लैक स्लिप पॉटरी फ्रॉम देयर. ओके, तो यहाँ से हमें बहुत सारे जो है रिमेन्स मिले हुए हैं मांडा से. वी फाउंड सम कॉपर टूल्स भी मिले हुए हैं, सम हमें पॉटरी भी मिली हुई है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं. कौन कौन से टाइप के? दैट इज रेडवेयर, ग्रेवेयर एंड ब्लैक स्लिप. ओके, we also found evidences of Harappan culture from Akhnoor, जैसे मांडा अखनूर में ही है. Then there is another important site, Ambaran, that is Goda. Then Mandalika Mud. Okay, so again this is a very important site. Some pottery belong to proto-historic period is also discovered from Dyalachak and Manamu region of Jammu. तो यहाँ से भी हमें जो है कुछ important चीजें जो है वो हमें मिली हुई है. Okay, so that is Harappan culture in Jammu region. Okay, then जम्मू इन वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में जम्मू का क्या मेंशन है कि नहीं है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वैदिक टाइम पीरियड जो है, दैट इज 1500 से लेके 600 BC तक जो है वैदिक कल्चर ने जो है डोमिनेट किया, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया में. वैदिक कल्चर में आपका क्या है? वैदिक लिटरेचर में आपका क्या है? दैट इज योर आपके वेद हैं, 4 वेद हैं. ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एंड अथर्ववेद है. Then there are some allied literature like that is Brahmanas, there is Aryankas, then there is Puran, then there is Upanishad, etc. So we are rich in Vedic literature. Okay, so what about the condition of Jammu region in the Vedic literature? Of course, there are very few references of geography and topography of this country in the Aryan literature. Vedic culture is also known as Aryan literature because Aryans were supposed to be the composer of Vedic literature. Okay, the mountain system find references in early Vedic literature. Okay, the Pali literature, for example, mention Chula Himavant and Nilmat Puran. Nilmat Puran जो हमने discuss किया था, it is supposed to be the national epic of Kashmir. Okay, so Nilmat Puran जो है, it refers to some Himalayas, some as Antargiri, spreading from Kishtwar to Bhadrawa to Punch and Rajouri. Why I am writing not Punch but it is Punch. सो पुंछ, नीलमत पुराण जो है पुंछ को पुंछ बोलता है. ओके, इवन द महाभारत एंड अष्ट अध्यायी जो है, इट इज अ ग्रामर रिटन बाय पाणिनि. ओके, द महाभारत एंड अष्ट अध्यायी नो वन मोर डिवीजन इट रोट अबाउट उपागिरी विच सिग्निफाइज तराई एंड शिवालिक रीजन which spread from Jammu to Kangra region. Okay, Nilmat Puran also mention about the mountain that is Usiraka, which is also mentioned in different texts by different names. This mountain containing the famous shrine of वैष्णो देवी. यही जो माउंटेन जो है, ये वैष्णो देवी श्राइन की बात करता है कि यहाँ पे वैष्णो देवी श्राइन जो है वो है. द त्रिकुटा माउंटेन रेंज इज आल्सो मेंशन एट दैट इज त्रिकालकुटा इन वैदिक लिटरेचर. According to Puran, ancient Jammu was the part of Madar Desh.
ओके, मध्य प्रदेश और मध्य देश। सो पुराण कहते हैं जम्मू वॉज द पार्ट ऑफ मध्य देश विच वॉज रिस्पेक्टेड फॉर इट्स रिवर्स। बड़ी सारी रिवर्स थी इस देश में। दैट इज अपागा, दैट इज चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है चिनाब को बोलते हैं। देविका रिवर जो है सबसे प्रोमिनेंट रिवर थी। देन इरावती, then Tausi, then Udha, then Viswamitra. Okay, so these are the prominent rivers according to Puran, which were flowing, you can say that, which are flowing through the Jammu region, or ये Jammu region was the part of, larger part of Madhya Pradesh. So what do you mean by Madhya Pradesh? Madhya Pradesh क्या था basically? Okay, so first of all, let me clear one thing. ये आपने सुना भी होगा, इन महाभारत देर आर कौरवास एंड देर आर पांडवास। सो पांडवास जो हैं, जो पांच पांडव थे, दे वर द सन्स ऑफ पांडु। ओके, सो दे वर द सन्स ऑफ पांडु, ही वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। पांडु की दो बीवियां थी, वन वॉज कुंती एंड अदर वॉज मादरी। ओके, सो मादरी के दो बेटे थे, नकुल एंड सहदेव। ओके, और कुंती के तीन थे, दैट इज अर्जुन, दैट इज भीम एंड दैट इज युधिष्ठिर। ओके, देन देविका जो रिवर जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि मात्र पुराणों में मेंशन मिलती है, देविका रिवर को यंगर सिस्टर ऑफ गैंजिस भी बोलते हैं और गंगा रिवर भी बोलते हैं। उधमपुर सिटी इज नोन फॉर द देविका रिवर। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, देविका इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती। ये पार्वती की मैनिफेस्टेशन मानी जाती है। एंड अमंग ऑल रिवर्स देविका इज कंसिडर्ड टू बी द सैक्रेड रिवर। ओके, रावी रिवर को इरावती भी बोलते हैं और पारुषणी भी बोलते हैं। एनी हाउ, so let me discuss about the Madra kingdom which is mentioned in the Purans. Okay, Madra kingdom जो है, it is one of the western kingdoms mentioned in Mahabharata. Its capital was Sagala, जिसको आज की डेट में सियालकोट भी बोलते हैं। It covers the area between river Ravi and Chenab. Okay, so Kuru king's Pandu second wife, that is Madari, she belongs to Madra kingdom. That is दो बीवियां थी उसकी, one is Kunti and other is Madari. Who was Pandu? Pandu was the father of Pandavas. Okay, then during the battle of Mahabharata, शाल्या वा जो है, ही वॉज द रूलर ऑफ मात्रा किंगडम। शाल्या रूलर था, उसने कौरवों का साथ दिया था, पांडवों का नहीं दिया था। दैट इज सेपरेट स्टोरी। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, द फेमस तीर्थपुर, नाउ नो आल्सो नोन एज पुरमंडल, इन जम्मू रीजन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। सो पुरमंडल जो है आज की डेट में भी है, इसका मेंशन जो है विष्णु पुराण में भी हमें मिलता है। ओके, विष्णु पुराण में भी इसका मेंशन मिलता है। Apaga, another important river in Jammu region, that is, it is also mentioned in Nilmat Puran. Then Uj river flowing through the Kathua district has been mentioned by Panani grammarian at Udha. Okay, so Jammu की कुछ rivers का mention हमें मिलता है। निर्मल पुराण also mention विश्वामित्र river. Okay, so जिसको बसंतर river बोलते हैं, जो आज की डेट में सामा district में है। So this is the mention of Jammu in the Vedic literature. Okay. So that is, Jammu is also mentioned in other ancient text or ancient events. Okay, so during the time period of Alexander, so this information is very very important. During the time period of Alexander, Abhisar kingdom covered the areas between Chandrabhaga, that is Chenab river, and Vitasta. अभिसार किंगडम जो है इसके पास आती थी, और अभिसार में ही ये कुछ रीजन आते थे। इट वॉज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वाइडर ट्रैक, दैट इज कासली और कासल। ओके, अभिसार जो है फर्दर किसका पार्ट था, दैट इज कासल का, लाइंग साउथ ऑफ कश्मीर एंड एक्सटेंडिंग किश्तवाड़ इन द साउथ वेस्ट and Vitasta to the west. It included the states of Rajpuri, that is Rajouri, and Lohar. Okay, Punch area is also known as Lohar region. Okay, there is a very famous dynasty, Lohara dynasty was also there. Then you can say that Muslim historian later mentioned this area as a Chibal. इसको चिबल रीजन भी बोलते थे। ये जो आपका चोरी पुंछ का एरिया was part of outer hill region lying between Chenab and Jhelum, which is also include the area of Bhimber and Punch region. Okay, Punch was considered to be one of the oldest area of Jammu region mentioned in the historical sources. It was visited by Heung Sang. Heung Sang जो है, जो आपकी 5th century में आया, he was a Chinese traveler. Okay, he called Punch as Paranotsa. He also visited and mentioned Rajapuri or Rajouri. Al-Biruni also mentioned about Rajouri and Rajapuri. Kalhan did not mention about Jammu. So this is very, very, you can say that very, very astonishing fact that Kalhan didn't mention about Jammu. But his Rajatarangani mentioned about Basoli. Basoli के बारे में mention करते हैं, which is also known as Valapura. वालापुरा शब्द आया बिलावर और बल्लोर से।
बिल्लोर जिसको आप बिलावर भी बोलते हैं, और तो कलहन बसोली का मेंशन करता है। कलहन आल्सो मेंशन अबाउट भद्रवा, भद्रवा के बारे में मेंशन करता है। भद्रवा वाज नोन एज, दैट इज भद्रवस्का, दैट वाज नोन एज हैप्पी रीजन। स्टिल भद्रवा आज की डेट में इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, okay, so then Rajtarangni also mention about Babapura, that is ancient capital of Durgara or Dharwa Desh. So ये जम्मू के बारे में मेंशन नहीं करता। Similarly, Kalhan also mention about Kishtwar, that is Kashtawat. ओके, सो सिमिलरली सो अदर रीजन्स हैं जैसे मनकोट, जसरोटा, सांबा, भोटी, चनेनी, ये लेटर स्टेजेस में आई। यहाँ पे इसका कोई मेंशन नहीं मिलता। जो आज की डेट में दैट देयर आर सर्टन राजपूत क्लेन्स लाइक दैट इज मनकोटिया, जसरोटिया, संब्याल, भूतियाल। ओके, सो ये जो रीजन्स हैं, ये जो क्लेन है, ये लेटर स्टेजेस में इनका हमें मेंशन आता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द जम्मू इन ओरल ट्रेडिशनल हिस्ट्री, जैसे हमने बात की थी, the ancient historical tradition is narrated as narrated in Rajdarshini, which was written by Ganesh Das Badera. That is ascribed, Ganesh Das Badera कहता है राजदर्शनी में कि जम्मू की फाउंडेशन जो है 550 साल पहले, इट 550 years बिफोर द सेटिंग अप ऑफ कलयुग और काली युग। और काली युग एज जो है कब हुई? 3650 BC, और आज से लगभग लगभग जो है 5 से 6 हजार साल पहले। सो 6 हजार साल पहले जो है जम्मू स्टेट के बारे में जो है राजदर्शनी मेंशन करती है। और राजदर्शनी कहाँ से लेती है? वंशावली। सो व्हाट आई मीन टू से, इट वाज टोटली अनहिस्टोरिकल, और यू कैन से दैट विदाउट एनी हिस्टोरिकल एविडेंसेस। ओके, सो कलयुग जो है, देन देयर आर 4 युग, दैट इज सतयुग, देन त्रेता युग, देन द्वापर युग, देन कलयुग। ओके, सो दैट इज अ हिंदुइज्म का एक एक साइक्लिक है जो कि टाइम पीरियड है। ओके, सो अलग अलग जो है यहाँ पे जो है टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है। ओके, सो दैट इज जो हमने आज इट इज जो लास्ट क्लास में हमने मेंशन किया था, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी, अग्निवरण जो है दैट इज ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ कुश। वो जो माइग्रेट हुआ कहाँ से? अयोध्या से। कुश वाज द सन ऑफ लॉर्ड राम, और उसी की आगे फैमिली से अग्निवरण था। ही क्रॉस द रिवर रावी एंड सेटल्ड इन द जम्मू रीजन। This event took place in Vedic age. Then son of Agnivaran, that is Vayusrava, he conquered. He was very ambitious. He conquered all the lands. Then one of his successor, Bahu Lochan, he laid the foundation of Bahu Fort, and his brother, that was Jambu Lochan, he decided to found a new city that was known as Jambupura. Later on, it is known as Jammu. Why he found it? Because when he was on the hunt, he crossed the river Tavi, and he saw goat and lion, that is they are drinking water at the same time. So he was surprised by this event, and his minister said कि प्रभु ये बहुत ही पीसफुल एरिया है, तो यहाँ पे आप क्या करो, सिटी की फाउंडेशन करो। तो जम्बू लोचन ने जम्बूपुरा इस्टेब्लिश किया। So of course it seems to be like a myth or mythical without any historical evidences. Okay. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू जिसको हम बात करेंगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है दैट इज 500 BC से, दैट इज वैदिक एज से अगर हम बात करें, वैदिक एज जैसे जम्मू लोचन की बात करें, बाहु लोचन की बात करें, वैदिक एज के बारे में बात करते हैं, तो ओनली सोर्स इज वंशावलीज, दैट इज योर किंग्स डायरी, लाइफ स्पेन ऑफ लाइफ, फैमिली ट्री ऑफ द किंग्स। इट वॉज यूज बाई गणेश दास वडेरा इन हिज राजदर्शनी। सो गणेश दास वडेरा ने जो वंशावली जो यूज की जो राजदर्शनी लिखने के लिए, उसमें मेंशन सबसे पहले उसने किसका किया? दैट इज he mentioned about that is successor of Bahulochan and Jambulochan. Then he mentioned about the Rai dynasty. Then he mentioned about the Dhar dynasty. Both Rai dynasty, Dhar dynasty and your बाहुलोचन और जम्बूलोचन का हिस्टोरिकल जो है एविडेंसेस नहीं है, वंशावली है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के लिए, so this period is marked by no testified historical records, no contemporary sources. So there is no contemporary sources, there is no, you can say that Rai dynasty, the dynasty का कोई भी हमारे पास archaeological sources नहीं है। So आप बोल सकते हो it was a non-historical, a kind of a story which was narrated by Ganesh Das Vatera in the Rajdarshini. Okay, okay. So, okay, so this is you can say that Rai dynasty. So according to Vansavali, the first indigenous dynasty was Rai dynasty. Okay,
Why Jammu Lochan and Bahu Lochan was not the indigenous? Because they came from Mathura, or they claimed themselves, you can say, the descendant of Lord Ram. Okay, so Rai dynasty was founded by Adi Rai around 58 BC. He was contemporary of great Vikramaditya of Ujjain. Vikramaditya of Ujjain, he ruled for 48 years. Okay, so Adi Rai was succeeded by his son Dev Rai. He made Jammu as his capital around 10 BC. During this time period, Christ was born. Okay, सो ये बात कौन करता है? ये करता है योर गणेश दास वडेरा. सो गणेश दास वडेरा को भी हम डील करेंगे. खत्म होने दो एक बार ये सारा. So Dev Rai was succeeded by his son, that is Gandharv Rai. Gandharv Rai जो है, he was a weak ruler. Okay, the territory of Jammu Hills was probably subjects to Indo-Greeks, Indo-Parthians, Saka Pahlava, Kushans after the decline of Mauryan Empire. So Jammu dynasty जो है, Rai dynasty के बाद you can say that यहाँ पे कोई भी powerful kingdom नहीं थी. So Jammu was subject to you can say that इंडो ग्रीक रूलर. यहाँ बड़े बड़े रूलर है. तो इट इज सेड, तो प्रेजेंट डे जो जम्मू के आज की डेट में जो बोला जाता है, जो डिफरेंट राजपूत क्लेन्स हैं, दैट इज जमवाल्स एंड अदर्स, they are supposed to be the descendant, or you can, they belong to these criteria: Saka Pahlwas, Indo Parthian. Saka Pahlwas के लिए बोला जाता है according to Rajdarshini. Okay, so it seems several foreign tribes settle in foothills and adjoining plain, ruled as a jagirdar and petty satraps बोलते हैं. And after the fall of central power, they established their own tiny principalities under the title of Rajanka, Rana and Raja. Okay, ये राजा योगराज जो है, he was the last ruler of this lineage. And from here there is another clan emerged, that was Manhas clan. Okay, so Manhas clan. So then there is another dynasty, Dhar Dynasty. Okay, Suraj Dhar or Suraj Hans was the founder of this dynasty, 430 AD. ओके, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं राय डायनेस्टी कंप्लीट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज totally, you can say that, not important. And there are a long list of the rulers. Okay, so this dynasty ruled up to 425 AD. कहीं पे लिखा हुआ है 840 तक रूल किया. Surajдар was a noble and popular king. According to Vansavalis, people worshipped him. ओके, लोगों ने उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी. सूरज दर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, दैट इज गंगाधर. हिज अनदर सन, दैट इज सोजिलाधर और सोजिला चारक. ओके, उसका एक और बेटा था जिसका नाम था सोजिलाधर, और सोजिला चारक यहाँ से चारक लेना आया था. ओके, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द डायनेस्टी relapses into obscurity, and not much detail of events is available. Okay, so only one important event recorded in this period was the coming of a Muslim saint, that is Roshan Shah Wali. Roshan Shah Wali to Jammu, who lived for some years, who lived here for some years. Okay, near गुम्मट में उसकी जो है, that is there is one जिसको आप बोल सकते हो, एक इसकी दरगाह है, और यू कैन से दैट बोल सकते हो एक इसकी एक सराह बनाई हुई है. ओके, सो सराबा दर बिल्ट अ खानका ओवर हिज ग्रेव यार्ड. ओके, रोशन शाह वली. सो इन जम्मू देर आर लॉट ऑफ पीर्स एंड फकीर्स. Okay, and one of the oldest is Roshan Shah Wali. That is Vajradhar was the last ruler of the dynasty. There is a little doubt in Jammu's subjection to the ruler of Delhi during these centuries. मतलब यहाँ पे during this time period there are several rulers who ruled Delhi. Okay, so after this, after the dynasty, you can say that there is emergence of very one popular dynasty in Jammu, that is the Dev dynasty. Okay, so Dev dynasty जो है यहाँ पे आई. ओके, सो देव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है, दैट इज 814 ऑनवर्ड्स. ओके, देव डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था, दैट वाज सूरजमल. सूरजमल वाज द फाउंडर. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर्स of this dynasty, that was Raja Maldev. Okay, Maldev, he was very popular king. And the last prominent जो है, जिसको हम बोलते हैं रंजीत देव. Okay, so Ranjit Singh is different from Ranjit Dev. So Raja Maldev, राजा सूरजमल. ओके, सो दिस इज द देव डायनेस्टी जो हम अगली क्लास में करेंगे. सो आज हमने डिस्कस क्या किया, दैट इज अ जम्मू हिस्ट्री इन प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड. जम्मू, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ जम्मू इन प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड. देन द टाइम पोजीशन ऑफ जम्मू इन हड़प्पन टाइम पीरियड. देन द जम्मू इन द वैदिक लिटरेचर.
Okay, then the Jammu during the time period of, you can say that Alexander. Okay, then Rajatarangini ने जम्मू का कोई मेंशन नहीं किया. Then there is one source, that is राजदर्शनी. राजदर्शनी ने जो है एक दो आगे पीछे की गप्पे वप्पे लगाई, गप्पे बोला, इन्होंने फालतू का फेंका. वंशावली, that is totally not a historical source. According to Rai Darshani, there is a Rai dynasty, there is a Dhar dynasty, and finally there is a Dev dynasty, and finally, जो है, that was Dogras came into power. So this is all about today's class. Thank you so much. You're watching History Fox channel. This is me, Kashyap Sharma. Please like, subscribe, and share at least with 100 people. So thank you so much. Jai Hind and take care of yourself. Okay. So bye.